journey of learning how to create a dashboard in Excel. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। डैशबोर्ड होता क्या है? ओके, डैशबोर्ड इज समथिंग, इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में बात करें तो जैसे हम कार में बैठते हैं तो एक डैशबोर्ड दिखाई देता है। डैशबोर्ड पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बटन्स होते हैं, है ना, जिससे आप उस तरीके से कार को चला पाते हैं जिस तरीके से हमको चलानी है, या सारी चीजें हमको एक ही जगह पे मिल जाती हैं। सो व्हेन यू विजिट एनी वेबसाइट, अगर आप किसी वेबसाइट पे लॉग इन करेंगे, अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, वहां पे भी आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। जब हम एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल में बहुत सारा डेटा होता है, और उस डेटा को आप, जैसे आपके सामने एक डेटा दिख रहा है आपको, ये काफी बल्कि डेटा है। सो देर आर सम कॉलम्स, ए टू यू तक कॉलम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि देर आर 21 कॉलम्स इन दिस डेटा। और अगर मैं नीचे ट्रेवल करूं, कंट्रोल एंड डाउन एरो के साथ, यू कैन मूव डाउन, यू कैन सी देर आर 9,995 रोज, ऑलमोस्ट 10,000 रो का डेटा है, और 21 कॉलम है, तो काफी बड़ा डेटा हो गया, राइट। अब इस बड़े डेटा को एनालाइज करना है। ये सेल्स डेटा हो सकता है कंपनी का, कंपनी का प्रॉफिट डेटा हो सकता है, कंपनी का मार्केटिंग डेटा, कोई भी डेटा हो सकता है। लेकिन जब इसको एनालाइज करने की बात आती है, एनालिसिस की बात आती है, डेटा एनालिसिस की बात आती है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज द डेटा इफ द डेटा इज प्रेजेंटेड इन अ टैबुलर फॉर्म। ठीक है, तो आसान तरीका क्या होगा सर? आसान तरीका होगा अगर इस डेटा को समरी बना दी जाए, इस डेटा से कोई चार्ट्स बना दिए जाए, इस डेटा को पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो हम इसको आसानी से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। डू यू ऑल एग्री विथ मी? इफ यू ऑल एग्री विथ मी, यू कैन राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। अगर आपको भी लगता है कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, कि अगर इस डेटा को हम समरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो इसको पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होगा, इसको समझने का कुछ तरीका जो है बहुत आसान हो जाएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ वी कन्वर्ट दिस डेटा इनटू अ विजुअल। ठीक है, एंड इज इट रियली पॉसिबल इन एक्सेल? क्या ये हो सकता है? तो आंसर है हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ भी पॉसिबल होता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, चाहे वो एक्सेल है, चाहे वो लाइव। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू डू इट, हाउ टू गो अबाउट इट। सो उसी के लिए वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू क्रिएट अ डैशबोर्ड इन एक्सेल। ठीक है, विथ आवर फुल फोकस ऑन लर्निंग इट। ठीक है, चलिए लेट अस डू डाइव इनटू इट एंड लेट अस स्टार्ट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आई हैव शेयर्ड अ फाइल विद यू। आपको वो फाइल ओपन कर लेनी है, और जो जो चीजें हम कर रहे हैं वो आपको साथ में करना है, प्रैक्टिस टुगेदर। ठीक है, फर्स्ट यू विल लुक एट मी व्हाट आई एम डूइंग, एंड देन यू विल प्रैक्टिस इट विद ऑन योर सिस्टम। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली करेंगे तो बात ही कुछ अलग होगी। चलिए, अब मैं आपको एक झलक दिखला देता हूँ कि वो डैशबोर्ड जो है वो दिखता कैसा है। ठीक है, और आपको देख के कैसा लगा, आप चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो लेट अस गो टू द डैशबोर्ड, डैशबोर्ड फाइनल, एंड नाउ विद अ क्लिक ऑफ अ बटन वी आर ऑन द डैशबोर्ड। चलिए, तो ये जो एक बोरिंग सा डेटा हमारे सामने था, ठीक है, काफी लंबा चौड़ा, काफी बल्कि डेटा था, उसको हमने एक इंटरेस्टिंग से डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आपको क्या क्या नजर आ रहा है और कैसा दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, और अभी तो आपको सिर्फ एक डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, हम इसमें बहुत कुछ आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो हाउ डू यू फील बाय लुकिंग एट दिस? कैसी फीलिंग आ रही, कैसा लग रहा है डैशबोर्ड देख के? बहुत ही सिंपल डैशबोर्ड है, इस ज्यादा कुछ कारीगरी नहीं है। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है इस डैशबोर्ड के साथ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने आपको फाइल शेयर करी उसमें तो ब्लैंक है, उसमें सिर्फ डेटा है, क्योंकि यू हैव टू बिल्ड अ डैशबोर्ड। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी बिल्ड इट, सो आई हैव द लिबर्टी टू शो यू। जो लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को, या जो लोग क्लास में हैं, उन लोगों को खुद को स्क्रैच से बनाना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो डैशबोर्ड है, इट इज अ डायनेमिक डैशबोर्ड। नाउ व्हेन आई से डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायनेमिक? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायनामिक? Changing. Yes, it changes. Changes with what? Changes with what? Livestock value real time. Okay.
सो आई विल करेक्ट यू हियर, इट माइट नॉट चेंज रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो किसी से लिंक है, किसी वेबसाइट से फीडेड है, और वो वहां पे जो वेबसाइट में चेंजेस हो रहे हैं तो आपका डेटा भी चेंज हो रहा है। हमेशा। हाँ, यहाँ पर रियल टाइम चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो पास्ट डेटा, इट इज नॉट अपडेटिंग। यस, सो वी विल यूज सम फिल्टर्स टू चेंज द डेटा, टू सी द डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। और फिल्टर्स को डैशबोर्ड में स्लाइसर्स बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी भी स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि डेटा चेंज हो रहा है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो लेट अस सी। अभी आई हैव ऑफिस सप्लाई सिलेक्टेड हियर एंड आई हैव कंज्यूमर सिलेक्टेड हियर। ये है क्या सर? ये दो डिवीजन है। तो एक तो सेगमेंट है कि कौन से सेगमेंट्स को हम कैटर करते हैं, लाइक फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी। और दूसरा है कि हम किस क्लाइंट बेस को डील कर रहे हैं। तो एक हो सकता है कंज्यूमर, एक कॉर्पोरेट, एक होम ऑफिस। अभी मैं क्या करता हूँ कि ऑफिस सप्लाईज, आप फिगर थोड़े से याद रख लीजिए, एक फिगर याद रख लेते हैं हम, सेल्स ग्रोथ ओवर प्रीवियस ईयर, ये 31.6% आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको फर्नीचर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने फर्नीचर पे क्लिक किया, अभी आपको क्या नंबर दिखाई दे रहा है? सेल्स ओवर, सेल्स ग्रोथ ओवर प्रीवियस ईयर, ये क्या नंबर दिखाई दे रहा है? हैज इट चेंज्ड, यस और नो? क्या ये बदल गया है? क्या ये नंबर बदल गया है? यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। क्या ये नंबर बदल गया? अच्छा, फिर से देखते हैं कि कंज्यूमर की जगह हमने कॉर्पोरेट सेलेक्ट किया है। क्या ये नंबर फिर से बदल गया और इस बार अफसोस की ग्रोथ नेगेटिव हुई है? यस, देयर इज अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ -21.4%। Okay. And when we click on home office, we again see there is a 100 plus 109% growth in the sales over the last year. तो आखिरी साल की अगर आप सेल देखेंगे लास्ट ईयर की, तो 21,000 रुपए थी, और वो बढ़ के 44,000 हो गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई। दैट इज वाई वी कैन सी 100% ग्रोथ। सो दिस इज कॉल्ड अ डायनेमिक डैशबोर्ड, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसकी खासियत ये है कि जो जो भी इंपॉर्टेंट केपीआईज होते हैं, केपीआई, केपीआई का मतलब क्या होता है? केपीआई का मतलब क्या है बताइए? ये केपीआई, व्हाट इज केपीआई? कम ऑन, व्हाट इज केपीआई? KPI is key performance indicators. Yes, very good. शशांक, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब ये हुआ कि जो हमारे परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं, जो हमारा परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं उसे बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। द इंडिकेटर्स विच ट्रैक आवर परफॉर्मेंस, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज केपीआईज। ओके, चलिए। तो ये जितना भी आपको दिख रहे हैं, छह जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर में, दीज आर कॉल्ड एज केपीआई। तो हमने क्या क्या लिया? हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेल्स के 3 बॉक्सेस दिखेंगे, राइट हैंड साइड में आपको प्रॉफिट के 3 बॉक्सेस दिखेंगे। बिकॉज सेल्स जो है, अगर हम पीएनएल की बात करें, कंपनी की कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, तो एक तो बैलेंस शीट होता है, एक पीएनएल होता है। पीएनएल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और दो इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं पीएनएल के अंदर। वो कौन से दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है पीएनएल में, बताइए? जो कॉर्पोरेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरा, ये प्रॉफिट एंड लॉस तो एक है, दूसरा सेल्स, वेरी गुड। तो सेल्स, हाँ, एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट का पार्ट हो जाता है, और ये जो पीएनएल में है वो सेल्स और प्रॉफिट हो गया। तो सेल्स को हम बोलते हैं टॉप लाइन। टॉप लाइन ऊपर जो बैठा रहता है, स्टार्टिंग जहां से होती है वो सेल्स से होती है, और बॉटम लाइन जो है, जो नीचे आके हमको मिलता है, बॉटम लाइन, वो कहलाता है प्रॉफिट। तो अब बताइए, टॉप लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बॉटम लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? टॉप लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी या बॉटम लाइन? लिखिए, टी फॉर टॉप, बी फॉर बॉटम। टॉप या बॉटम, विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट? बॉटम लाइन, यस, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर सेल्स करते जा रहे हैं और लेकिन प्रॉफिट नहीं मिल रहा है ना, सेल्स पे सेल्स मिल रही है सरकार, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फिर क्या फायदा ऐसी सेल्स का, क्या फायदा? ठीक है, तो प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, मतलब बॉटम लाइन इज इंपॉर्टेंट। बट बॉटम लाइन जनरेट करने के लिए सेल्स भी होना चाहिए, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं
और वी कैन जनरेट दैट। ठीक है, चलिए अब ये तो एक सिंपल सा चीज हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। और देखिए यहाँ पर आपको ये तो फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, इसके नीचे अगर और डिटेल में अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रही सब कैटेगरी, मतलब कैटेगरी में भी सब कैटेगरी लगा दी है हमने कि भैया फर्नीचर के अंदर क्या क्या चीजें बिक रही है, 2017 में क्या सेल थी, 16 में क्या थी, और फिर ईयर और ईयर ग्रोथ कैसे हुई है, ईयर और ईयर ग्रोथ कैसे हुई है। और अभी आप एक चमत्कार देखने वाले हैं। So you will see that now when I click on office supplies, see what happens. देखिए क्या हुआ, can you tell me what has happened when I clicked on office supplies? Look at this list and tell me what has happened. When I click on technology, look at the list and tell me what is happening. क्या हो रहा है यहाँ, बताइए क्या हो रहा है। हम्म, you can see that the list is changing. Yes, machine is negative in technology. हाँ, ये डेटा चेंज हो रहा है। मेन जो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वो ये है कि डेटा चेंज हो रहा है। सिमिलरली, ठीक है, अगर हम यहाँ से कंज्यूमर से कॉर्पोरेट सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी डेटा चेंज हो रहा है। होम ऑफिस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे डेटा चेंज हो रहा है। डेटा जो है वो रियल टाइम बेसिस पे चेंज हो रहा है, और डेटा ही नहीं, डेटा के साथ जुड़ा हुआ चार्ट भी बदल रहा है। देखिए, आप कॉर्पोरेट पे क्लिक करें, अब आप कंज्यूमर पे क्लिक करिए, देखिए चार्ट बदल गया। होम ऑफिस पे क्लिक करेंगे, अगेन यू कैन सी दैट द चार्ट हैज चेंज। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन सेम डे, यू विल सी दैट अगेन द चार्ट हैज चेंज्ड। ठीक है, तो इज इट इंटरेस्टिंग, इज इट लुकिंग इंटरेस्टिंग टू यू? अब देखिए यहाँ पर एक फ्लो दिखाई दे रहा है आपको, असेंडिंग डिसेंडिंग टू असेंडिंग में आपको दिखाई दे रहा है कि छोटे से बड़ा स्टेट विद हाईएस्ट सेल्स ऑफ ऑल द टाइम। ठीक है, हाईएस्ट सेल्स दिखा रहा है। और यहाँ पर हमने एक ट्विस्ट बनाया था लोएस्ट भी। तो अगर आपको लोएस्ट देखनी है, थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, और यहाँ आपको दिखेगा टॉप 10 और बॉटम 10। अब आप बॉटम 10 पे क्लिक करेंगे और अब आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ये बॉटम 10 पे चले जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे भैया? ठीक है, तो यू कैन चेंज। यहाँ कुछ इशू हुआ है शायद, लेट मी चेक। और see, we have linked the data, we have linked the data. So when you link the data you get to see all these changes. ठीक है, when you link the data you get to see the changes in the data. So we have in button R45. Okay, ठीक है, so when you click on this you will see the changes happening. ये आपको दिखेगा। आई विल शो यू व्हेन आई क्रिएट दिस चार्ट। ठीक है, चलिए, सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट दिस। ठीक है, आर यू एक्साइटेड टू लर्न हाउ टू क्रिएट दिस? आर यू ऑल एक्साइटेड? कैन यू शो सम एक्साइटमेंट इन द चैट बॉक्स प्लीज? यप, वेरी गुड। चलिए, नाउ इवन आई एम एक्साइटेड टू टीच यू ऑल दिस। लेट अस स्टार्ट द जर्नी। सो वी हैव कम टू द डेटा सोर्स फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहला काम डैशबोर्ड में यही होता है कि डेटा को अच्छे से एनालाइज कर लो। एवरीथिंग इज डेटा, डेटा इज द किंग नाउअडेज, इट्स अ बिग डेटा। तो डेटा ही हमारा मालिक है, सब कुछ है। ठीक है, तो डेटा को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले देख लेते हैं डेटा में है क्या क्या। ठीक है, सो आई होप द डेटा इज विजिबल, आई एम जस्ट zoomed in so that you can read the headings properly. So we have order ID, we have order date, we have ship date, we have ship mode, we have customer ID, we have customer name, we have segment, country, city, state. ठीक है, तो यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑर्डर के बारे में बता रही है आपको। सेल्स डेटा है ये, ऑर्डर आईडी बता रहा है, ऑर्डर डेट कौन सी डेट को ऑर्डर हुआ, कौन सी डेट को शिप हुआ, शिप का मोड क्या था, फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास था, स्टैंडर्ड क्लास था, कस्टमर का आईडी क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, कौन से सेगमेंट को बिलोंग करता है, कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, कौन से सिटी में रहता है, कौन से स्टेट में रहता है, पोस्टल कोड क्या है। उसके बाद रीजन कौन सा है, जिस कंट्री और स्टेट की बात करें। फिर प्रोडक्ट की बात करी, प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करी, सब कैटेगरी की बात करी, प्रोडक्ट नेम की बात करी है। तो यहां से लेके ए से लेके क्यू तक जो है वो सारा डेटा जो है वो किस तरीके का नजर आ रहा है आपको? बताइए किस तरीके का डेटा अभी हम तक देख रहे हैं। तो ये जो डेटा अभी तक आपको नजर आ रहा है ए से लेके क्यू में, वो किस टाइप का डेटा है? व्हाट वुड यू से, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज? व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज? कम ऑन टेल मी, what type of data it is? It is qualitative data. Can't we see, can we see that it is a qualitative data? Qualitative data है, ठीक है।
क्योंकि ये क्या है, आपको कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है डेटा का। रो आईडी क्या है, ऑर्डर आईडी क्या है, ऑर्डर डेट क्या है, शिप मोड क्या है, कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट का नाम, ये सब। और आखिरी के जो चार कॉलम है, आखिरी के जो चार कॉलम है, सेल्स क्वांटिटी, डिस्काउंट और प्रॉफिट, ये किस तरीके का डेटा है? ये डैशबोर्ड इज समथिंग, इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में बात करें, यूनिक। तो जैसे हम कार में बैठते हैं तो एक डैशबोर्ड दिखाई और क्या है डैशबोर्ड, और उसके साथ में क्या है, यूनिक के साथ में क्या है ये डेटा। अगर हमको डेटा को बांटना है दो दो हिस्सों में, तो हम कैसे बांटेंगे इसको? और ये जो पहली मेरी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, उन लोग से आंसर आना चाहिए, जो कि आ नहीं रहा है। यस, क्वांटिटेटिव डेटा, वेरी गुड शशांक। इट्स अ क्वांटिटेटिव डेटा, पहले भी आपको बताया था। आप भूल जाते हैं क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है? इफ यू डोंट रिवाइज देन यू टेंड टू फॉरगेट। सो इट इज ऑलवेज अ मैसेज टू एवरीवन हु इज watching this or you're learning with me, they keep revising things. If you don't revise you tend to forget. ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी डेटा है हमारा, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और मैं इसको ट्रांसपोज करके पेस्ट करने वाला हूँ। सो आई विल पेस्ट इट इन द ट्रांसपोज मैनर नाउ। ठीक है, ये काम आपको भी कर लेना है कि आप कॉपी करेंगे पहला वाला रो, और उसको जब पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी के बाद राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, और स्पेशल पे आपको दिखेगा ऑपरेशन के नीचे ट्रांसपोज। उस ट्रांसपोज पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाएगा डेटा। इफ यू हैव डन दिस मच देन यू कैन राइट डाउन डन इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आई एम गोइंग स्लो सो दैट एवरीवन कैन फॉलो व्हाट आई एम डूइंग एंड कैन डू इट अलोंग विथ मी। ठीक है, तो आप तुरंत प्रभाव से ये कर सकते हैं। चलिए बताइए, क्या आपने डेटा को पेस्ट कर लिया है? और इसके कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या कारण है। तो पहले ये कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई वी आर डूइंग दिस। डेटा को हमने कॉलम को क्या बना दी है, रो बना दी है, और रो में आपको दिखाई देगा। अब इसका हम नंबर रखेंगे, ठीक है? वी आर गिविंग दिस नंबरिंग। ठीक है, तो हम इसको एक नंबर देंगे। और इन माइंड फाइल इज नॉट वर्किंग, व्हाई दिस फाइल इज नॉट वर्किंग? कोमल, व्हाट इज हैपेंड? ओपन नहीं हो रहा है, व्हाट इज हैपेंड टू द फाइल? Can anyone share the file again in the chat box, in the Zoom chat? चलिए, so what, have you copied this data? Have you copied this data? If you have copied, we can go ahead. ठीक है, तो जब अभी कॉपी कर लेंगे, जब अभी कॉपी कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे चीजों को। ठीक है, हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करने वाले हैं। हाँ, अब हम इसमें से एनालाइज करने वाले हैं कि कौन कौन सा काम है। ओपन होगा, आपको एडिट वर्कबुक पे करना पड़ेगा। अगर ये ओपन हो गई है तो आप देखेंगे इनेबल एडिटिंग आएगा, ऑप्शन लिखा हुआ ऊपर एक बार आ रहा होगा येलो कलर का, जिसपे लिखा होगा इनेबल एडिटिंग। जब आप उस पर क्लिक करेंगे देन यू विल बी एबल टू डू एंड वर्क ऑन इट। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप कंट्रोल ए दबाएं, पूरा डेटा कॉपी कर लें, एक नया एक्सेल खोलें, इसके अंदर पेस्ट करें, और फिर उस पर काम करेंगे। ठीक है, आई होप दिस विल वर्क। चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रो आईडी, कॉलम आईडी, अब हम क्या करेंगे, इसमें से छांट लेंगे कौन सा डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखिए डैशबोर्ड तो मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन डैशबोर्ड बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट एक जो चीज होती है वो ये है कि डिजाइन ऑफ द डैशबोर्ड। ठीक है, सो आई विल ऑल्सो वी विल ऑल्सो लर्न हाउ टू डिजाइन द डैशबोर्ड। ठीक है, वी लर्न हाउ टू डिजाइन द डैशबोर्ड, बट उससे पहले, डिजाइन करने से पहले आपको ये देखना है कि हमारा डेटा जो है वो कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, और कौन सा हमें काम में लेना है। तो व्हाट वी विल डू इज, ये ग्रीन कलर से आ रहा है, जो जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा उसको हम यहाँ पर ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए, मुझे लगता है ऑर्डर डेट इंपॉर्टेंट है, मतलब हम काम में लेंगे ऑर्डर डेट को, तो आप उठाएंगे इसको और यहाँ से इसको कर देंगे ब्लू शेड। ठीक है, एक बार जब आपने कर दिया तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, वहां से सेलेक्ट करने की, आप F4 की प्रेस करेंगे और ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर डेट इंपॉर्टेंट है, शिप डेट
Hello. Say your voice is not coming, sir. नाउ इट इज कमिंग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yeah. ओके, थैंक यू। सो ट्रांसपोज आपको पता पड़ गया, ओके, थैंक यू। सो पीपल हैव डन ट्रांसपोज। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इज, हम इसमें से हम इनको डिलीट कर देते, कंफ्यूजन ना रहे, सबकी निगाहें जो है पहले वाले कॉलम पे रहेगी, कॉलम एक्स पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। डोंट गिव अटेंशन टू योर एक्स, गिव अटेंशन टू व्हाट इज देयर इन द एक्सेल। वो वाले एक्स की बात करो, उस एक्स पे मत चले जाना, ठीक है। तो अभी बोला सर आपने कहा एक्स पे ध्यान देंगे, तो अब एक्स, ये वाले एक्स की बात कर रहा था मैं, ठीक है। डोंट टेक इट पर्सनली। चलिए, तो अभी, या ठीक है, पीपल माइट गो टू, या सो डोंट गो टू योर एक्स, बी इन प्रेजेंट। चलिए, what we have to do is we have to skip some of the entries from here and focus on some of the important entries। तो हमने रो आईडी ऑर्डर आईडी छोड़ दिया, कोई बताएगा क्यों छोड़ दिया? ये कौन सी इंफॉर्मेशन छोड़ते जा रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन हम छोड़ते जा रहे हैं? वो वाली इंफॉर्मेशन जो कि यूनिक है, जो कि यूनिक, जिसके अंदर यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज है, वो हम छोड़ रहे हैं। और कौन सी ले रहे हैं? वो वाली ले रहे हैं जिसमें कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। इसका एक कारण है, ठीक है। कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट आई एम डूइंग, why I'm skipping the unique values and why I'm taking the common values? Yes, anyone who can explain me this, बताइए क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि हम यूनिक वैल्यूज ले रहे हैं और कॉमन वैल्यूज नहीं ले रहे हैं? अक्षय कुमार, आंसर दो। कोमल, can you answer this question, why we are taking only the common values and not unique values? I can't hear you. Anyone? Hope I am audible. सॉरी, व्हाट इज द यूनिक वैल्यू क्वेश्चन? में डिजिट डिजिट है, यूनिक नहीं, अलग अलग नंबर है, हाँ अलग अलग है। हाँ, तो उसको छोड़ा क्यों है? ये तो यूनिक का मतलब तो यही होता है, अलग अलग। लेकिन कौन सा छोड़ क्यों रहे हैं हम? रो आईडी में अलग अलग नंबर आएंगे, ऑर्डर आईडी में अलग अलग आएगा, लेकिन हमने उनको छोड़ दिया। हमने बोला हम ये नहीं लेंगे डेटा, डेटा डैशबोर्ड बनाते वक्त हमने कहा है कि हम ऑर्डर डेट लेंगे, शिप डेट लेंगे, शिप मोड लेंगे, सेगमेंट लेंगे। यही क्यों ले रहे हैं? सर वो समरी कैसे होगा ना, और रो आईडी ऑर्डर आईडी का? एग्जैक्टली, करेक्ट, दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो समरी बनाने के लिए वी शुड हैव कॉमन डेटा। जब भी आपको डेटा का समरी बनाना होता है, यू हैव टू ग्रुप देम टुगेदर। देन ग्रुप उसी का बन सकता है जिसमें कॉमन चीजें हों, ठीक है। सो वी आर हियर in this meeting because we have a common agenda, you have a common objective. Your objective is to learn, my objective is to teach. So since we have a common objective, we are here. If everyone has a different objective, they are not here. People who are not here, they don't have this objective. Okay, so there has to be something in common. चलिए, so let's move forward। और हमें एक एक को एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा कॉमन है, कौन सा अनकॉमन है, ठीक है, यूनिक है। तो जो भी कॉमन कॉलम्स है जिसमें यूनिक जो कॉमन वैल्यूज होंगी, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं विद ब्लू। वी विल टेक ऑल दैट, ठीक है। वी विल नॉट टेक द प्रोडक्ट आईडी, बट वी विल टेक द कैटेगरी। ओके, वी विल टेक द कैटेगरी, ऑब्वियसली वी विल टेक द कैटेगरी लेवल। तो इसको फिर से मुझे एक बार ब्लू करना पड़ेगा, एंड देन या so I'm selecting some of the things which I understand that they are common, ठीक है। सब प्रोडक्ट नेम हम नहीं लेंगे, अब यहाँ हमने ये सारी कैटेगरी ले ली है, ठीक है। अब जहां जहां भी मैंने लिया है, आई एम पुटिंग कॉमन ओवर हियर, ओके। सो व्हाटएवर आई हैव टेकन, आई एम पुटिंग कॉमन ओवर हियर बिकॉज़ दीज आर कॉमन, आई हैव टेकन दैट। ये चारों जो है, ये चारों मेजर्स हैं। दीज फोर्स आर मेजर्स, दीज फोर्स आर मेजर्स, दीज फोर्स आर मेजर्स। तो अगर मेजर है तो हम क्या करेंगे? मेजर है तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम डार्क येलो कलर से कर देते हैं। let us put as a different color because these are measures and I will write down measure over here. Obviously we are going to take that also, we are going to take this also, but we will call them measure, ठीक है। नंबर है, इससे भी काफी सारी चीजें हम काम में लेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट बिल्डिंग द डिजाइन फॉर द डैशबोर्ड। सो वी आर टेकिंग कॉमन वैल्यूज ओनली, वी हैव केप्ट द यूनिक वैल्यूज डिफरेंटली, उसको छोड़ दिया, इग्नोर किया हमने यूनिक वैल्यूज को।
ठीक है, तो आई एम पुटिंग द यूनिक वंस आल्सो। मेजर्स को हमने लिया है, तो यहाँ हम ले रहे हैं, यहाँ हम लिख देते हैं कि डोंट टेक और टेक, डोंट टेक एंड टेक। तो ये नहीं लेना है और ये लेना है, ठीक है। चलिए अब लेके करेंगे क्या, तो जो भी कॉमन चीजें हैं जैसे सेगमेंट, कंट्री, स्टेट, रीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, इससे हम एनालिसिस करेंगे। सो नाउ विल क्रिएट अ डिजाइन, नाउ विल क्रिएट अ डिजाइन फॉर द डैशबोर्ड। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंसर्ट अ न्यू शीट, उसका नाम लिख देना आपको, या शीट 2 ऑलरेडी है उसको रीनेम करके यू विल राइट डाउन डैशबोर्ड डिजाइन, ठीक है। और डैशबोर्ड डिजाइन करने के बाद नाउ यू विल सी सर हमें तो ये ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है, आपकी शीट पे ग्रिड लाइंस क्यों नहीं दिखाई दे रही, आपकी शीट पे ग्रिड लाइंस क्यों नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आई हैव गॉन टू व्यू और व्यू में से ग्रिड लाइंस को मैंने अनचेक कर दिया। देखिए ग्रिड लाइंस आ गई हैं फिर से। आप व्यू में जाएंगे, व्यू मेन्यू में जाएंगे और मैं आपको ले चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ जाना है। जाने दो मुझे जाना है, ग्रिड लाइंस मुझे जाके हटाना, ठीक है। तो हमें कहाँ जाना है, कितने 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 कितने, ठीक है। तो व्यू मेन्यू में जाके इतने आपको जाना है और यहाँ पे एनोटेट करना पड़ेगा और इसको एरो से दिखाना पड़ेगा किधर 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 किधर। So I'm going to go here. So this is a very small shape. It's the arrow, yeah. Yes. ठीक है, तो विल गो हियर, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है। और इस चेक बॉक्स पे जाके आपको टिक कर देना है। Have you understood how to remove the grid lines? ठीक है, तो we have to just uncheck this box, ठीक है, इसको अनचेक कर देंगे, ठीक है। तो अनचेक कर देते हैं हम, अनचेक कर देंगे एंड अनचेक द बॉक्स। सर वन थिंग, ये जो शीट दिखा रहे हो, आई डोंट सी दोस ब्लॉक्स इन माय शीट, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2। You have to create, ओके, अच्छा, ओके, हाँ you have to create, ठीक है, दैट इज आई थैंक डोंट सी। हाँ, आई शो यू हाउ टू क्रिएट ऑल दिस, ठीक है। तो ये आपको बनाना है, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, पहले हम इसको अनचेक करेंगे, ग्रिड लाइंस को हटा देंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज रिमूव द ग्रिड लाइन, सो यू विल सी अ ब्लैंक शीट। जैसे मैं नई शीट लेके आता हूँ, ठीक है, आई लेट मी मूव टू अ न्यू शीट। So let me move to a new sheet. And the first thing that I'm doing is removing the grid lines. अनचेक कर दिया, ग्रिड लाइंस हट गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ बॉक्सेस बनाने हैं, तो हम इसका हेल्प ले लेते हैं। सो डैशबोर्ड जो था हमारा डिजाइन, नाउ सो वी हैव अ लोगो ओवर हियर, तो विल पुट अ कंपनीज का लोगो। उसके बाद हमने दो फिल्टर बटन बनाए हैं, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू दिस और मैं अनचेक कर देता हूँ शीट 1 की, शायद हाँ अनचेक करा हुआ है। नाउ यू विल इंसर्ट अ शेप, ठीक है। यू कैन जस्ट सिंपली से लोगो ओवर हियर, लोगो, और यहाँ इसको आप सेलेक्ट कर ले पूरे एरिया को, ठीक है। और आप होम पे जाएं, होम पे जाके यू कैन से थिक आउटसाइड बॉर्डर्स, तो यू विल सी अ बॉर्डर ओवर हियर, ठीक है। और आप दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर आप उसको और थोड़ा अच्छा बनाना है तो यू कैन पुट इट ओवर हियर, इसको यहाँ रखिए और इसको कर दीजिए मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। अब आपको दिखाई देगा कि ये जो लोगो है ये हमारा सेंटर है, ठीक है। इज इट मेकिंग सेंस टू यू, आर यू गेटिंग इट? सो ये हमने लोगो बना दिया। व्हाट वी विल डू इज वी विल कॉपी दिस लोगो, इसको कॉपी करते हैं और इसको ही यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा मैं मर्ज एंड सेंटर को चेंज कर देता हूँ, इसी को कॉपी करके वापस एक और बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो दिस हैज बिकम, नाउ यू विल अप्लाई द बॉर्डर लाइंस अगेन, यहाँ पे बॉर्डर लाइन। तो पहला हमारा लोगो आ गया, यहाँ पे आएगा हमारा फिल्टर 1 फॉर लेट्स से प्रोडक्ट कैटेगरी, और दूसरे में हम लिखेंगे
filter 2 for customer मतलब सेगमेंट, ठीक है, मेक सेंस। मैंने अनमर्ज मर्ज कैसे किया इसको, ये मर्ज एंड सेंटर से, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर से मर्ज किया है, ठीक है। So, sir, can you tell the first step again? Grid मैंने unclick किया, the lines went. वो जो हाँ, rectangle है, where did you click? ये मैं बताता हूँ। फिर अब मैंने क्या किया, मैंने एक सेल के अंदर लिख दिया लोगो, ठीक है, मैंने एक सेल में लोगो लिख दिया, उसको Yeah. नियर बाय सेल्स जो है सिलेक्ट कर लिया, 4x4 का या 3x3 का ग्रिड आप सिलेक्ट कर लें। देन आई डिड मर्ज एंड सेंटर, तो ये बीच में आ गया लोगो लिखा हुआ, ठीक है, इसका फॉन्ट मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसको बोल्ड कर दिया, और Got it. Thank you. ये बॉर्डर लगा दिया है, ठीक है, दिस इज व्हाट आई डिड। हैव यू अंडरस्टूड दिस गाइस? Yes, Komal, you can reply in the chat box if your mic is not working. You can reply. अक्षय कुमार, ठीक है, यहाँ हो गया, इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड, अब आपको आपको बनाना है, इसी को मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। नाउ यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू एज इट इज कॉपी दिस, ठीक है, एंड फॉर योर बेनिफिट व्हाट आई विल डू इज आई एम पेस्टिंग अ पिक्चर ऑफ दिस इन द जूम चैट, ठीक है, और उसको थोड़ा सा हम बोल्ड भी कर देते हैं। यहाँ पर जो है लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज, सारे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, सबकी फॉन्ट बढ़ा देते हैं थोड़ा सा किया, और राइट नेक्स्ट कर देंगे, बस ठीक है। चलिए, तो हमने ये कर दिया है, और यहाँ पर इसका एक काम करते हैं, इसका रेफरेंस। ओके, सो यू हैव टू क्रिएट लाइक दिस, और इसको हम रैप टेक्स्ट कर देते हैं, और इसको हम बड़ा कर देते हैं, आपको ढंग से कर देता हूँ। Okay, so create something like this, what I'm creating. तो आपको ये बनाना है। चलिए, नाउ आई एम शेयरिंग दिस इन द चैट बॉक्स, इतना बनाइए, उसके बाद मैं आगे शेयर करूंगा आपको, ठीक है। दोज हु आर डन कैन राइट डाउन डन इन द चैट बॉक्स, ठीक है। चलिए, आई विल गिव यू 2 minutes टू डू दिस, डू इट फास्ट, एंड जब तक आई विल सॉल्व द
Komal's problem. Komal, I am making you co-admin. Now you can share your screen and show me what is the problem that you are facing. बाकी सब लोग ये बनाएंगे, ठीक है, ये आपको क्रिएट करना है. सृष्टि आप चले गए थे शायद बीच में, आपको ये क्लियर है ये कैसे बनेगा एक्सेल में? हम एक लेआउट बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक लेआउट क्रिएट करना है. ओके, अच्छा ये समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है. आपका प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड दिखा रहा है, तो ये आपको इसमें कुछ एडिटिंग नहीं करने देगा. आप शीट 2 पे जाइए, एक बार शीट 2 पे जाइए, शीट 2 पे जाइए. टाइप एनीथिंग, टाइप एनीथिंग यार. लोगो लिखो, लोगो लिखो, लोगो. सेल A1 के अंदर लोगो लिखिए, टाइप करिए. टाइप करिए. आर यू एबल टू टाइप एनीथिंग? कुछ टाइप नहीं हो रहा है. ओके फाइन. देन विंडो की प्रेस करिए, विंडो की प्रेस करिए, विंडो प्रेस अ विंडो की, विंडो की प्रेस करिए अपने सिस्टम पे. हाँ, नाउ टाइप इन एक्सेल, टाइप इन एक्सेल. उसके अंदर एक्सेल टाइप करो आप, ठीक है. अभी नहीं, ये वाला ओपन नहीं करना है आपको. नीचे जाइए, एक्सेल 2010 कुछ है आपके पास, 7 या कुछ नहीं है. ओके, एक सेकेंड. ये जो एक्सेल डे फॉर फाइनेंशियल डेटा सैंपल आ रहा है उस पर राइट क्लिक करिए, फाइल पे क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक ऑन दिस, ओपन फाइल लोकेशन. हाँ ये करिए इसको ओपन फाइल लोकेशन. नाउ राइट, हाँ इनेबल एडिटिंग करिए. नाउ गो टू दिस शीट 2, गो टू शीट 2, टाइप एनीथिंग ओवर हियर. कुछ टाइप करके देखिए हो रहा है. नो. सो व्हाट हैज हैपेंड इज योर प्रोडक्ट एक्टिवेशन हैज फेल्ड. मतलब आपका जो एक्सेल है वो अब काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि ये जो आपने प्रोडक्ट लिया था इसमें प्रोडक्ट की लगेगी तभी ये चलेगा, ठीक है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डाउनलोड एक्सेल 2007 और समथिंग लाइक दैट, तो ही आपका एक्सेल काम कर पाएगा. आप किसी भी कोई भी फाइल में कुछ भी नहीं कर सकते अब आप, तो दैट इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, गेटिंग इट. चलिए, दैट इज अ प्रॉब्लम. ओके, नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन Sometimes I've अगेन. seen अगर मेमोरी कम है तो भी ये इशू आता है. So just check if memory is also less. हाँ, you can just delete some of the file from the dump also. कई बार ऐसा भी हो जाता है, प्राइमरी फाइल्स में अगर कुछ पड़ा है तो वो भी आप कर सकते हैं. चलिए, एंड नाउ आई एम आल्सो शेयरिंग द YouTube live link which is there so that you can check. जो लोग का छूट गया वहां से देख सकते हैं. चलिए, इतना बन गया सब लोग का. Hope you have created all this. If you have created this, then we can move ahead. ठीक है, देखिए ये हम क्यों बना रहे हैं लेआउट, क्योंकि हम इससे इसी जगह पे सब चीजें बनाने वाले रखने वाले हैं. जो हमारा फाइनल डैशबोर्ड बनेगा, ये देखिए इसके पीछे एक वर्किंग छुपी हुई है. अगर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ आपको दिखाई देगा कि हमने लिखा फिल्टर बट फॉर कैटेगरी. ठीक है, तो ये आपको पीछे की वर्किंग दिखा रही है. इसको हमें छुपाना था, तो हमें यहाँ से कुछ नहीं करना था, इसको हम कर देते नो बॉर्डर. ठीक है, तो बॉर्डर हट जाते. इसको मैं कर देता हूँ, सबको सिलेक्ट करके कर देता हूँ नो बॉर्डर. सो बॉर्डर्स विल गो फ्रॉम हियर एंड आई विल मेक द फॉन्ट एज वाइट सो यू विल नॉट सी एनीथिंग बिहाइंड. ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक था. ठीक है, तो ऑल दीज आर बटन्स और इन बटन्स के अंदर वैल्यूज आ रही हैं. ठीक है, तो ये हमने लेआउट बनाया है. तो हम जो बना रहे हैं ना लेआउट, वो इसलिए बना रहे हैं कि आप ये ऐसा कैसा बना सकें. ठीक है, बन गया, आगे बढ़े. चलो आप लोग ट्राई करना, क्योंकि आई कैन नॉट वेट फॉर एवरीवन नाउ. तो आई विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. ये आपको बनाना है. अब ये बनाने के बाद यहाँ पे फिगर्स कैसे आएंगे. ठीक है, पहले हमें ये फिगर लाने हैं. ये फिगर कैसे आएगा, ये फिगर कैसे आएगा, ये फिगर कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा. तो बॉक्सेस तो मैं इजीली आपको बता सकता हूँ, पहले बॉक्सेस बता देते हैं. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले तो दो स्लाइसर्स चाहिए, वो स्लाइसर्स थोड़ा सा बाद में आएंगे. अब हमें क्या चाहिए था, हमें बॉक्सेस चाहिए थे. तो लेट मी कॉपी दिस फ्रॉम योर, let me copy this cells from here, control C,
and control V, control V. ओके फाइन, ठीक है। पहला टेक्स्ट बॉक्स बोल रहा है सेल्स फॉर द लेटेस्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए सेल्स फॉर द लेटेस्ट ईयर। इस टेक्स्ट बॉक्स वन को तो हम उड़ा देते हैं और ये जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। लेट मी कॉपी दिस कंट्रोल सी से। नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल गो टू इंसर्ट, यू विल गो टू इंसर्ट एंड शेप्स। इंसर्ट में जाएंगे, शेप पे जाएंगे और एक शेप लेके आ जाएंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी आपको पसंद है, ये शेप लाके यहाँ पे रख दीजिए। रख दिया आपने शेप, ठीक है। उसके बाद आप डबल क्लिक करेंगे शेप के अंदर या राइट क्लिक करेंगे और एडिट टेक्स्ट करेंगे और ये जो टेक्स्ट हमने पेस्ट किया था, कॉपी किया था, उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद उसका फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। डन, डन 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 डन, ठीक है। तो ये हमारा काम है, सेल्स फॉर द लेटेस्ट ईयर, ठीक है। इतना बड़ा नहीं रखना है क्योंकि एक नंबर भी आएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते, इतना कि पढ़ने में आ जाए बस, ठीक है। सेल्स फॉर द लेटेस्ट ईयर ये मैंने कर दिया। अब आप यही काम बार बार नहीं करना है, ये काम बार बार नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। तो कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद एक दो तीन चार और डब्बे बना लेंगे। एक डब्बा एक एक को सौंप दीजिए यहाँ पर, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा, ठीक है। So we have the boxes now. Sale for the latest year, sales for the last year, then we'll say growth over sales growth, sales growth भी बोल सकते हैं, sales growth, y on y, year on year, ठीक है, y o y, year on year। और इसी तरीके से एक और है आगे, एक और कॉपी करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, एक और कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और तुम भैया इधर जाइए, आप इधर जाइए, और एक और कॉपी निकली, आप इधर आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स को हम रिप्लेस कर देंगे प्रॉफिट वर्ड से। तो इन तीनों डब्बों में जहां पे भी सेल्स लिखा है उसको प्रॉफिट, इसको भी हम ऑटोमाइज करेंगे। तो कंट्रोल एच, अगर याद हो तो कंट्रोल एच क्या करता है, रिप्लेस करता है टेक्स्ट को। तो सेल्स जहां पे भी लिख के आ रहा है उसको प्रॉफिट कर देंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो जहां जहां पे भी सेल आ रहा है वो सब रिप्लेस हो जाएगा। तो पहले करेंगे फाइंड, तो यहाँ नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है। आगे चलो, आगे चलो, फाइंड ऑल। तो ये देखिए, ये है ना बॉक्स के अंदर ही ढूंढ रहा है, तो हमको ये मैनुअली करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं प्रॉफिट फॉर लेटेस्ट ईयर, प्रॉफिट, ये लास्ट, लेटेस्ट, और ये लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। और यहाँ पे आएगा ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, जैसे सेल्स ग्रोथ थी वैसे प्रॉफिट का क्या ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ, वाई ऑन वाई। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है? ऑन दिस इज क्लियर टू यू? आर यू गेटिंग इट? इधर भी लोगो लगाए थे, सुना सुना सा दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ लोगो आएंगे कंपनी के, और बीच में ये आएगा स्लाइसर्स, और ये 6 बॉक्स बन गया हमारा। आर यू ऑल विथ मी टिल हियर? आर यू गेटिंग व्हाट इज हैपनिंग? Okay, completed. I'll take a 1 minute break. I'll come back in 1 minute. Okay, you can complete this.
ओके, आई होप एवरीवन इज डन नाउ। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट दिस आल्सो। ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू तो दे ही दूंगा कि कैसे बनाना है। मे बी आप लोग को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बट वी विल डू इट। चलिए, लेट अस स्टार्ट ओवर अगेन एंड सी वी हैव गॉट दिस, वी हैव क्रिएटेड द डिजाइन। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज हाउ टू गेट दिस नंबर। सर ये नंबर कैसे आएगा? ठीक है, बिकॉज दिस नंबर इज नॉट कमिंग फ्रॉम द टोटल। ठीक है, इट इज अ डायनेमिक नंबर। व्हाई इट इज अ डायनेमिक नंबर? बिकॉज इट इज चेंजिंग विद द चेंज इन द सिलेक्शन। तो हाउ टू क्रिएट दैट सिलेक्शन, हाउ टू गेट दिस नंबर, तो आज हम जो फोकस करेंगे वो इस लर्निंग पे करेंगे कि हाउ टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ अ सिलेक्शन मेन्यू एंड ये नंबर कैसे चेंज हो। ठीक है, तो नंबर लाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्रिएट अ पिवट टेबल। आपको एक पिवट टेबल बनानी पड़ेगी। पिवट टेबल क्या होती है सर? पिवट टेबल ये होती है कि हम एक वर्किंग शीट बनाएंगे, और इस वर्किंग शीट में हम क्या करेंगे, इस वर्किंग शीट में हम कुछ समरी टेबल्स बनाएंगे। देखिए आपको यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है जो कि हमने इनसे जनरेट किया है। तो ये जो नंबर है ये एक समरी है। दिस इज समरी ऑफ द डेटा फॉर 2 years 2016 एंड 17 का सम ऑफ सेल्स एंड सम ऑफ प्रॉफिट है, सम ऑफ सेल्स एंड सम ऑफ प्रॉफिट है। और जैसे ही हम कोई डेटा चेंज करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए अभी आ रहा है 1,15,000 और यहाँ पे 20,000 आ रहा है। ठीक है, लेट मी डू सम चेंजेस इन द डैशबोर्ड एंड लेट मी सप्लाई दिस, मी चूज दिस ऑफिस सप्लाई। नाउ ऑफिस जाएंगे अपने वर्किंग शीट में। देखिए नंबर चेंज हो गया यहाँ पर 83,000 और 16 टू 210 आ गया। यहाँ पे -8% हो गया, पहले कुछ और आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शीट थी हमारी फाइनल डैशबोर्ड की, इसमें जो नंबर चेंज हो रहे हैं, ये नंबर कहीं से फ्लो के आ रहे हैं, यहाँ पर कहीं से फ्लो के आ रहे हैं। कहाँ से फ्लो के आ रहे हैं? if you want to check this, what you have to do is you have to just click on this and you see it is coming from the working sheet B5। वर्किंग शीट B5 मतलब सेल नंबर B5। ये वाले नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो इट इज कमिंग फ्रॉम B4। ये वाले नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो इट इज कमिंग फ्रॉम E5। ठीक है, सो दिस इज हाउ दीज नंबर्स आर ट्रैवलिंग। ये नंबर इस तरीके से आ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? That these numbers are coming from the working sheet. Do you understand this? Do you get this? Yes or no? We got it, but what does that exclamation if I mean? Exclaim. See, working is the sheet name. Okay. Correct. Exclamation just attach the sheet with the cell. Okay. So it is just using as a concatenation function where we are adding, we are referring to the working sheet may go to B5. Okay, so in the working sheet you have to go to B5. So how do you take the value from this table? Okay, so we are giving a reference. For example, let me put a number over here, let me put the same thing over here. So I'll just press a equals to sign. Okay, I just press a equal, maybe here. Okay, so I'll put a equals to sign over here, and now what I'll do is I'll go to working sheet. Okay, now I'll select this number and let's say enter. Now you get this number. Okay, but when you get this number, you get a address also where this number is flowing from. So it is coming from get pivot table data and all this thing. Okay, so what we need to do first is we need to understand how to create a pivot table. Now how do we create a pivot table? Let us do that first. So we'll go to the data set, जहाँ पे हमारा डेटा था वहां पे आ जाएंगे, उस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, सेलेक्ट द एंटायर डेटा एंड देन गो टू इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। वी विल गो टू इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, सेलेक्ट द एंटायर डेटा, गो टू इंसर्ट मेन्यू एंड द इंसर्ट गो टू पिवट टेबल। इन द इंसर्ट गो टू पिवट टेबल एंड इन द पिवट टेबल सेलेक्ट फ्रॉम टेबल और रेंज। तो हैव यू अंडरस्टूड हमने क्या किया? हम डेटा सेट पे गए, डेटा सेट को सेलेक्ट कर लिया पूरा। ठीक है, और सेलेक्ट करने का हमने क्या, इंसर्ट के अंदर हमने सेलेक्ट किया पिवट टेबल, और पिवट टेबल में ये बॉक्स हमारे को नजर आ रहा है। Are you all with me till here? Are you getting it? Yeah. Yes, are you all with me?
Shrishti, you are getting it? Yes, sir. Yes. ठीक है, आप लोग साथ में बना रहे हैं आई गेस। ठीक है, तो आप ये पिवट टेबल क्रिएट करेंगे और देखिए यहाँ पे टेबल डेटा में लिखा हो रहा है डीटी। क्या आपकी शीट में भी डीटी लिखा आ रहा है? यहाँ पे जो रेंज है वो रेंज आ रही है या डीटी लिखा हुआ है? व्हाट आर यू गेटिंग ओवर हियर? Data, हाँ, data freeze a ratio freeze u. हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डेटा है वो डेटा शीट, आपकी शीट का नाम डाटा है, जैसे मेरी शीट का नाम वर्किंग था या डेटा शीट था, आपकी शीट का नाम ये है और यहाँ से रेफर हो रहा है ये। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यहाँ तक चीजें हो गई हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के हमें कहना है कि इस पिवट टेबल को आप नई शीट में बनाइए। तो देयर आर टू ऑप्शन, न्यू शीट एंड एग्जिस्टिंग शीट। वी विल से न्यू शीट एंड क्लिक ऑन ओके। न्यू शीट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हाँ, सो यू माइट गेट ऑल दिस नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन न्यू शीट यू विल अराइव एट अ न्यू शीट। सृष्टि, व्हाट अबाउट यू? Are you on the new sheet? Okay, so when we are in the new sheet, you will see that there is a panel, एक box दिखाई देगा आपको, which is a floating kind of a box. This is a floating kind of box which is named as pivot table fields. You will see 4 fields over here. Filter, column, row, values. इसको आप float कर रहा है, ये इसको कहीं पे ले जा सकता है, राइट हैंड साइड में भी फिक्स कर सकते हैं, जाके लेफ्ट हैंड साइड में फिक्स कर सकते हैं। तो we have fixed on the left hand side. Can you see that on the right hand side on the Excel you will see a pivot table? Okay, now what is a pivot table? Pivot table is a summary table. Okay, as we mentioned that we have to create a summary of the data, so pivot table actually helps in creating a summary of the data. And to create a summary we have 4 basically layout of a pivot table. There are 4 pillars of the pivot table. Okay, so these are called as the 4 pillars of the pivot table. So these 4 pillars basically are there to guide you on how to use the pivot table. Okay, these are 4 pillars which will help you in guiding how to use the pivot table. Okay, so we will work on it now. Okay, chaliye, so just a minute. Yes, now what you need to do is we need to select what to put where. So I think Shrishti, are you here? Can you listen me? ठीक है, आपका माइक वर्क कर रहा है सृष्टि? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ सृष्टि? Okay, I think she is not available. Shashank, can you unmute yourself? Yeah, sir. I cannot Yes, sir. hear you. Yeah, okay, fine. So now let me ask you some questions. We have, what do you see on the pivot table? The row ID, order ID, what are these? Columns, right? These are the column headings, right? These are the column Yeah. headings. Okay. So what we are supposed to do is from these columns heading, we have to select a heading and put it in the 4 what you can say quadrants or boxes over here. So one is filter, one is column, one is row, and one is values. Okay. So the objective of creating a pivot table right now is to find out the sales for 2 years. Okay. I want to find out the total sales for the year 17 and for the year 16. Okay. Now you guide me as to where do I put the sales value, in which section of the pivot table, filter, column, row, or values. So now if I take a column here, that's what I see on screen, then that can be put into column. Okay, so you are suggesting me to put the sales in the column, is it? No, okay, here, so sales you can put in rows. In the rows. Sales in rows, yes. Sales in rows. Yeah. So if I put the sales in rows, do you see the output on the screen? Okay, sorry, I was expecting qualitative. Then you put this in values. Yes. So when we put the sales in values, we see one number.
Yeah, you can see that we have got the total sales, that is 22,97,200. correct. And we did not put any formula in Excel. Okay, so that is the power of pivot table. Pivot table automatically summarizes your data based on some calculation, which it is done in the backend of Excel, but you don't have to look into that. Okay, we are not bothered what is happening at backend, but we are getting the output. So what else we want? We want the sales distributed over 2 years. We want the breakup of the sales now. So what to get the breakup? What should I do now? So go to years column, which was last field, last column, Yeah, years. last, yes. And put it And now here I always get confused whether to put into row or columns because both work. So is yeah, there both any work. logic Okay, so when to? let me answer you this question. Let us put it in rows. So if we Yeah, put it in rows, we get 4 columns, that four answers, 14, 15, 16, 17. Okay. And yeah, they are coming in horizontal, one below the other. If I put it in the column, we will get all the numbers one aside the other. Okay. Now I need to decide कि row में रखें या column में रखें. See, if we put in row, it makes more sense because it is readable. Okay, yeah. readable. We can read it one after the other. It is very simple to read all this. Okay. Secondly, when I put it in the column, it is readable also, but it is like I have to go from left to right to read all the numbers, and I cannot analysis and all. So it is always better to keep if you have only one or two variables, then keep it in the rows only. Okay, first point. Second point is that when you keep one thing in row and you want to further dig inside the data, suppose you want to have the sales for every year, and that too with the segment also. You want to see what is the segment wise sales for these years. So what you can do Yeah. is now you can bring in segment into columns. So now this is the more elaborated table. Can you see that now? Yes. Yes, but I don't want to see all these decimals and all. So what I can do is I can just select all the numbers and go to my home tab and click on this comma button over here. So it will convert everything into decimal, reduced decimal. And if I want to just get rid of the decimal, I can just decrease the decimal also from the home number section. Yeah. Fine. So two questions. What if I change segment in rows and years in column? I mean, Nothing will happen. See, I'm doing that now since you've asked this. So the presentation will change. The numbers remain the same. Everything remains the same. The presentation differs. So it is like, how do you decide what to put where? It depends on the simple question, what you are trying to analyze and what is your point of analysis. Suppose I want to analyze the growth year on year for consumer segment. So I've put the segment in the rows. Now I can look around the years to see what is happening. Now, if I want to see years growth over segment, I can put the years in row and consumer in the segment. Okay. So that is just the way of presentation. The mode is actually dependent on how you are comfortable with it. Okay. The point okay, is, so yeah, what you want to analyze will go in row. That's what at a high level you're saying. exactly. Okay, thank you. Yeah, so we can just put the segment in filter maybe or years here, and again I don't want I don't want to see the segment right now. I'm just bothered about the figures, the numbers year wise. But the thing is that it is showing me 4 years. I just want only 2 years. I don't want to see 4 years. So what I do is I can put the year in filter also now. So if year has only one field, you can either put it in the row or in the filter. If you put order date in the filter, do you see? Yes, on the top we have order date, but order date will have all the dates. It will have all the dates, right? So what we can do is you can see a drop down over here. Okay, this will also act as a filter. I'm zooming in. Can you see this? When I clicked on the drop down, I'm getting a list. Okay. Now it is showing me all the options. I can just select 2016 and 2017. Okay. This ignore this date and this about date. Okay. We can take this also, but doesn't make any sense. 16 and 17, and we'll click on OK.
So now my data is reduced to 2 years. My data is reduced to 2 years, the years which I wanted to analyze. I wanted to put it on my dashboard. Is it now making sense? Yeah. Yeah. Okay, so this is exactly what we want. हमें यही चाहिए था, हमें 2 साल का डेटा चाहिए था, 2017 और 16 का वो आ गया है. अगर आप उसको अरेंज करना चाहते हैं कि सर 17 पहले दिखना चाहिए, तो we can say newest to oldest, so 17 will come up and 17 will go down. 17 has come up and 16. Okay, so 16 has is down now, 17 has come up. ये आ गया. चलिए, अब हमें एक फॉर्मूला निकालना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. We have to find out the difference between these numbers, the percentage growth basically. So we will do one more thing. When you come to this, when we created the pivot table, this is the first pivot. We will call it as pivot table number 1. We will name this table as PT1, pivot table 1, and it is showing the sum sales over years. Sales over years. This is the first table, PD1. Now what you need to do is, and I will just remove the filter from here. I don't want. So this is my first table. This is my first table. Okay. This is my first table, PT1. When I select this entire pivot table, and I go to analyze pivot table, it will show me the pivot table name. On the left hand side, you can write down PT1 over here. We'll give this, or you can call it sales over years. So we can sales over years. I will tell you the reason behind this afterwards. Okay, so we have to just write in the pivot table 1 sales over years. This is, we have renamed the pivot table. So whenever you now select the pivot table, you will get to see this name only, sales over year. Okay, so we can see that name over here, sales over year, years. Now, second thing what we need to do is we need to go to options in the pivot table. And we need to just uncheck on this generate get pivot data, uncheck on this. Okay, and now what we need to do is we need to find out the percentage change. Okay, so now what is the difference that it makes when we just uncheck this button? So let me just again go to analyze pivot table, and in the option what we have done, we have just, it was a tick over here, generate pivot, get pivot data. So now when you have the tick on and when you give a reference to any cell, it writes the formula get pivot data sales A3 years order date 2017. So what it is giving from the pivot table in the sales column, get the data from A3, okay, and in the year, if it is 17, then give me the value from B4. Okay, this is the function that we are getting, but we will not get into complications. So what we will do is we will again go to this pivot table and analyze pivot table. Options, will uncheck this. And what I'll do is I'll just put a formula. I want a growth sales growth y on y. Okay, and for that you will put in a formula. So what formula you are going to apply? This divide by this. So we get a number 1.20, and we want to have it in percentage. So I'll just subtract -1. So we have this number. Now I want to convert this into a percentage. So you will just press Shift, Control, and 3. So now it is a percentage. I will just write the formula over here, formula text. So this is exactly what we have put, and after putting that, the output we have just converted into percentage by pressing Shift, Control, and 5. Make sense to you, everyone? Sorry, what is that? Shift Control 5?
Are you all with me? One question. Yes. In my sheet, I only get columns till profit. I don't see columns later. Like year, I don't see. I don't know why. In your sheet, you don't see years. So yeah, so only till profit the columns have come. But after Yeah, that, in I my sheet don't. also the columns are till profit only. See what happens is when you create pivot table, okay, so the pivot table divides the order date into three parts. That is order date, months, quarter, and year. You can see these are additional columns which you see. No, I don't see that. That's my thing. I don't see in my sheet. You don't see this. So what I do you don't see see is this only three. what do you see is only order date. That is what you're saying. Correct. Acha. That's What about others? I mean, if others are saying. Yeah, I just asked. अक्षय कुमार, आपको पेड टेबल में ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं? Order date, month, quarter, year. See, it generally comes. Let me just see why you're not getting it. Akshay? Shrishti? Just check is the date is in the date format in your case. Go to the data sheet and just check the date column. Okay, just go to the date column and the order date one, and it should be formatted as a date. Do you see that this is the date format in your Excel? And how do I find? It is slash. I mean, 11/11/2014. Maybe that is why you're not getting. Okay, so just go to the number section over here, and where this is written, just select a short date. One sec, okay. Is it changing the format by any chance? And now again, try to create the pivot table. See if you're getting more options. So short date, I should click, right? That's what you're saying. Yeah. Okay. One sec. Yeah. And this time I got DT, okay? Last time I had not got DT, which you had asked. Okay. Now are you getting the options? Just I'm check. checking. No, only till profit again. Okay, do one thing. Just go to analyze pivot table. Yeah, I am there. And in the group. Sorry, where? Okay, group, in the group, yeah. Yeah. Group field. Can you see group field? They are all disabled. I see group, but all the three fields are disabled. All the three fields are disabled. Okay. What about filters? The next section. Is it also disabled, the filter? Filter, I have insert slicer and insert timeline. That is visible. Acha. But the group is disabled in your case. Yeah. Acha. Can you click on order date? Where is order date? In the pivot table fields. Okay, understood. Order date. Yeah, I clicked on order date. Now is the group active? Let me check. Yes. Click on the group What? field. Sorry? Click on it. Group field now. No, group field is still disabled, but that three values came. 1 minute. Three values came. Quarter, years, and what was that? Date, Quarter, year, years. month and year. Yeah. Only quarter and years came. Only two field came. Not a problem. So you can just continue with the year for like we just want the year basically.
Yeah, and row label suddenly appeared like 14, 15, 16, 17. So yeah. Okay. Okay. So now you can filter on the and put only 16, 17. Select 16, 17 only from your filter option. Okay. Okay. Yeah. Okay. And I put sum of sales and profit. Okay. All right. Are you getting the same similar values as I'm getting? 1 minute. Akshay Kumar has sent something in the chat box. Let me see. No, my value sales sum of profit. अक्षय सेल्स को डालो उधर वैल्यू में आपका ने सेल्स को डाला नहीं है वैल्यू खाली है आपका वैल्यू में सेल्स डालिए तभी आएगा और उसमें से सिर्फ 16 17 सेलेक्ट करो बाकी सब निकाल दो फिल्टर में जाके व्हाट यू सीइंग शशांक 1 minute. Okay. So no, sum of sales is 609,205 for 16, and profit is 81,795,93439. so what you have you selected Select 16, 17. Yeah, that's it. okay so you're getting a different figures Yes. maybe there is some change in the data possible might be possible Possible. Okay, no problem. yeah but we are understanding the concept so you're getting the Yes. concept right. Correct. Okay now what now yeah so what we need to do is basically we want this number to come in our dashboard okay so this is we'll just check it is b4 16 and b5 is 17 okay now we'll go to our dashboard design where we are designing our dashboard okay so it was sheet 1 sheet just give me one. Yeah, sheet 1 it is. Yes. Now I want the figure over here. So what we will do is we will just click inside this cell. Okay, and we will come to the formula bar. We will come to the formula bar. Okay, we'll type is equals to, and in the sheet where you have created the pivot table, you will go to that sheet, and in that sheet you will select that number. Okay. So we want to select a number for 2016. Okay, and press enter. Okay, so now this is going. Okay, so it's a working accidentally. So we get a number, but our text is getting hidden. Okay, we are not able to see this. So just a minute. Okay, fine. What we need to do is we need to insert a text box. Okay. So instead of writing this inside the box, what we'll do is we will insert text box. So go to home and go to insert. In the insert, you will get a text box, and you will insert a text box over here, and we'll copy the things we want over here, and we will increase the font size. Okay, so we'll insert something like this, and we don't want the fill in the text box. So what we'll do is we will go and remove the fill area. So again, you go to insert, and from the text box, you don't want the fill. So what we'll do is we will select right click on this fill, and we'll say no fill, no fill. Yeah, and we'll make this outline also no outline. So we have this, we can convert this into white color, change the color to white. Done.
Okay, and now you will do the same thing is equal to, and we have sheet one, and B4. Sheet two. Okay, so we have got this number. We will increase the font size, make it longer. Okay, can you see the number? Yeah, we can. Yeah. So how did I get it? First, I inserted a text box, okay, in the box, and in the text box, then I had written this formula of sheet 2 B4 because my B4 cell has the latest year. So I want a latest year sales. So latest year is B4. Okay, the last year is B5. So again, I'll go to this one and see the formatting. Yeah, I will copy the same thing. I will just delete this one. I will copy the same thing, paste it over here. Okay, reduce the size a little bit. Again, I paste this thing here. This text box also you can copy paste and put it over here. Okay. So now this will become the sales for the last year. And one last change that you need to do is you need to change this to B5. Okay, and you will get a different number. And now you can forward. So now both the numbers are here. Same thing we need to do with this cell also. We will delete this one. We will copy this one. Control C, and what we can do is we can group them together. Okay, so select this, and in the home tab, select everything and right click, and there is option of group. So you can create a group. Once you have created a group, now this will travel together. So we will say Control C, Control V, and we'll paste this over here. And now we want the growth over here. So we'll say growth. Of growth, sales growth, we can say sales growth Y05. Okay, so we can have the sales growth Y and Y. And this number is coming from which cell? So let us see. It is coming from this cell, which is D4. So I'll mention D4 over here. And we will copy the form. Okay, so all the three numbers are visible to you. Yeah. Okay, similarly, we have to create the same thing for profit, all these. So we will do that and we will complete this. Okay, so we need to do the same thing. So
what we'll do is we will copy this and paste it over here. 1, 2, 3. Let us print out. Put this over here. Okay, now instead of sales, what I want is profit. So I will write down profit. Here also I will write down profit. Here I will write down profit growth. Okay, and now in the sheet 2, I have not stated profit. I'll put the profit also. So now I get profit for 17, 18. 17 is C4 and C5. So I'll have to just change the reference. So this becomes C4, C5. This becomes C4. And this, we need to create a formula for this. So we will copy this, paste it over here. Copy this, paste it over here. And now I will just change the references, which is, or I don't have to do anything. I can just put it over here now. Yeah. So I can say C4 by T4. C5. I have got this good. It is E4. So I can say E4. Okay, so we have done all these things. Now we could actually create the values for the first 6 cells. Makes sense to you? Now what we'll do is we will remove the borders from here. So just we see the boxes. Increase the size of this box. As well. Is it fine? इतना हो गया सबका? Now we want to put some slicers. So last thing for the day, okay, we will just end this section by I'm just explaining how to insert the slicer. So to insert the slicer, we will go to, again we'll click on the pivot table, we'll go to analyze pivot table,
And there is a section called as insert slicer. So we'll click on this and we want segment, one slicer for the segment and one for the category. So one I've selected for the segment and second one I want for the category. So these are the two slicers I've got. Okay, these are the two slicers I have got. I will copy both the slicers, copy it, and I'll paste it here in the sheet one. Paste. Okay. So these are the two slicers. Now I want them in columns and not row actually. So I'll go to slicer. And in the slicer, we have got an option of columns. So I will just make 3 columns and I will increase the width. Okay, and reduce the height. I will reduce the height of this from here. So even my slicers are now ready. So I can put it over here, one over here, other one over. We can stretch it a little more. This also. Can you see the slicers? I put the slicers. Yeah, we can. Yeah, I can name it as segment, and this slicer I will name it as category. This is my category slicer. And this is my filter slicer, segment slicer. Okay. When you click on slicer, you will have the option of selecting from the different styles. Okay, so you can select any style which suits you, which like looks good to you. Okay, to have a different color or whatever selection and all. Okay, so we can select any one style, this thing, which resonates with our dashboard. Okay. Yes. Great. Now you want to increase the size, the font size, and all. You can click on it, and or maybe this. Now you see when you click on this, all the numbers are changing. When you click on this, all the numbers are changing. And the last thing is to insert a logo. So let's say I'll insert my logo. But one thing, how did that connection come from consumer to all those? I'll show you. I'll tell you. Just give me one moment. I'll show you how it works. So I put the logo also now. Now see how does this connection comes? That is what you're asking, right? Yeah. So when you click, when you see, let me just little bit correct this also. So we see properly. Yeah. Now see how does the connection comes? From where does the connection come? Basically, what we are doing is when you create a slicer, okay, so at the back end, what it is doing is it is reporting this connection. So when you see the slicer segment, in the slicer segment, you have a field called as reports connection. Can you see that report connection? Yeah, I can. Yeah. So when you click on it, it shows all the pivot tables which it is connecting to. So we have connected it to sales over years. You remember we had named that pivot table as sales over years. Yeah. So it is coming from sheet 2 and sales over here. Now, if I don't want to this slices to work, if I've unchecked this, now when you click on anything, it will not happen. See, nothing is happening now. The numbers are not changing now.
Can you see that? Got it. Are not changing it now. But when I go to report connection and when I select any pivot table, it will automatically connect the variables from this, because see, the segment and category is coming from pivot table only. From the pivot table, it has taken a part and seeing it based on the segment. Now, when I choose the consumer, it will only add up the values which is in consumer. And if I go back to the pivot table, you will see in the pivot table also, when I click here, you see in the filter, now when you see this number, when you double click on this, you will see that all the consumer in the segment, there is a consumer only everywhere. You don't see any other value. You're getting it? Got it. Yeah, so this is the inbuilt feature of pivot table. That is why it is so powerful, and that is why it is very important topic to understand and to learn how to create a dashboard. So just one thing, can you go to the Excel sheet again? Sorry, your final sheet. Yeah. So first, when you no, not that the previous one. Wait, this one? No, not that. The one which you are just showing, the slicing thing which you created. Yeah, this. So when for that sales for last year. This one you are Yeah. talking about. So yeah. So for getting this, sorry, if you can go to the tab again, sir. The dashboard tab. Dashboard. Final or design? The design one. This one you're talking. This one? Yeah, this. What is the name? Sheet one. Okay. So when you wanted to get data 331905, what was the first step you did? So I had created this Correct. I remember that sales for last year. I had put the text box to put the text. Connection. Now when I wanted to get the text, the number from here, what I did is I just referred it to the sheet from where I wanted to pull that data. So I've removed this now. You will not see anything. Okay. Wait. Yeah. So you'll not see any number now because now my sheet doesn't have any reference. This cell doesn't have any reference. Okay. Now, when I want to get in data, first I will select this, then I will write over here sheet one. The same way in which the sheet name is there, sheet one, whatever name you have, you can write that, put an exclamatory sign, and then B4 or B5, whatever it was. And got it. Okay. And you don't have any function that sheet. Okay, fine. I don't have any what? No, so you use that function sheet. That's what you're saying. When you write sheet, there a function comes right below. Exactly. Fine. Yeah. Got it. Okay. I just put the function, this thing. So in this, I have given a reference. So when you click on any of this this thing cell, you will see a reference of to where the numbers are coming. Got it. Yeah, that is how we create this. Thank you so much. It was an interesting session. Hopefully, I'll apply it. Thank you. Okay, so now you can practice what you can do is try creating the different tables, okay, and the filter. What I will do is I will just give you the design so that it becomes easy for you to follow it. I'm creating a new Excel sheet. I'm sharing the design also in the new Excel, so you can work on the design. And in the next session, we will complete this dashboard. I'll show you something more also in the next session. So, from tomorrow, we will have morning sessions. Thank you so much. Yeah, so it'll be morning 7 to 8. Maybe, or maybe we'll start a little early. I'll ask everyone if everyone is comfortable. Let us start with 6:45 and take it to, because I'll have to end the session at 8 o'clock exactly because I have a lecture from 9. So yeah, we will keep it
So I'm sharing this file, Mark D'Souza. Hi, Mark. Hi, hello. Hi. So I think you have joined recently. Yeah, I have been trying. I sent a mail today that I'm not able to get the link. So I went into your website now. I Okay. paid for annual membership. Okay, you had sent it before also, right? Yeah. I'm not able to get any response. So, and I had registered even an earlier email, but I think when I register, we don't get any acknowledgement or a mail from you. No, actually, you must have got one email saying that your invoice and all these things. You're not getting that. No, I have not received anything. Not in. I've Okay. received only the Google Pay, acknowledgement. There is something wrong There's with no. my email ID. I do not know. I'll check. Actually, I did. My team was not able to work on that. Your query. Hope I'm like glad that you are here. You reached here. So I will just look into it right now, right away. And are you added to the members group also by any? No. I have got that old membership, that same group I am in. What you're now converted into like advertisement or Acha, okay, announcement for fine. the. So, okay. So, can you just please actually share your number here in the Zoom chat to me on a DM on a personal Yeah, message? I'll share it right now. Yeah, please do it. I will add you to the members group, and in that group we do all the information, we share all the information, and I will add you to the broadcast list also, so Yeah. you get all the information. Yeah. Yeah, I put. Okay, fine. Yeah, I got it. I will share. So, see, today's session we had, it was a live YouTube live also. So, I will share the link to watch the session. Okay, Yeah. you can watch it. Even it is a recorded session, so you will be able to access the recording also on the same webinar page on our Fine. site. Okay. Okay, yeah. So, I've shared the file. I will again share the practice file so you can download it and you can actually work with this. And if you have any trouble, you can drop me a message on my WhatsApp. I will give you, you have my number also, I guess. So, uh, yeah, this is the data set. Okay. And I'm just putting my number again. Yeah. So, yes. And I'll add you to this thing. You're working in some company? Huh? No, I'm a practicing chartered accountant. I've Oh, been and from practicing where? for the last 35 years. Oh, great. So we have a senior member over I'm here. in Bangalore. Yeah. You are in Bangalore. Okay, great. Okay. So I'll be doing one session for CS for tax audit also on how to apply various things using Excel for tax audit. Okay, Oh, that's maybe great. Yeah. next week I will plan this on the next 15th or 16th. I'm planning this. I will definitely add you to the group. Okay. And we will announce all the things over there. Yeah. Okay. Thank you. Thanks. Okay. Thanks a lot. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Yeah. Thank you. Bye. 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 Thank you everyone for joining in and keep practicing. I've shared the files, completed, and maybe we'll continue with this tomorrow. Mark, if any by any chance, if you get some time in the morning, we will have this continued session tomorrow morning from 7 to 8. If you can join in, you will get the information in the group. If you are available, you can join. Sure. Okay. Thank you. Thanks a lot. Okay, thank you. Bye. Bye. Okay. Thank you. Shall